This is lecture number 12 out of 12. It means this is the last video of this series. JavaScript Events and DOM. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ इवेंट्स पे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है. इवेंट्स मीन आपके पास ऑन क्लिक इवेंट्स होता है, माउस रिलीज का, कीबोर्ड प्रेस का, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं. ठीक है, हमने ऑन क्लिक पे ये सारी वीडियो के बारे में पढ़ना है. गेट एलिमेंट बाय आईडी. व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द यूजर. एक एक्शन होता है. इवेंट आपका क्या? आप कीबोर्ड को प्रेस करते हो, कीबोर्ड की की को प्रेस करते हो तो प्रेस इवेंट है. कीबोर्ड की की को रिलीज करते हो तो ये रिलीज इवेंट है. माउस इन होता है, माउस आउट होता है, ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स अकर्स व्हेन अ यूजर क्लिक्स करता है, टाइप करता है और मूव द माउस. ये सब के सब इवेंट्स हैं. जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट्स. तो जावास्क्रिप्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है उन इवेंट्स पे? जिस इवेंट्स का आपने कोड लिखा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट बिहेव करेगी और कोड एग्जीक्यूट करेगा. इवेंट्स मेक वेब पेज इंटरेक्टिव. अगर आप इवेंट हैंडलिंग करते हो तो इससे क्या होगा? आपका पेज इंटरेक्टिव पेज आप बना सकते हो. कॉमन जावास्क्रिप्ट इवेंट्स. जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? नंबर 1 इज ऑन क्लिक, मीन व्हेन यूजर क्लिक्स. नंबर 2 ऑन माउस ओवर. जब आपका माउस उस कंट्रोल के ऊपर होगा तो वो उस वक्त इवेंट एग्जीक्यूट हो करेगा. ऑन की डाउन, व्हेन की इज प्रेस्ड. ऑन लोड, व्हेन पेज यूज टू बी लोडेड. जब आप पेज लोड करेंगे उस वक्त ये इवेंट एग्जीक्यूट करेगा. What is DOM? DOM stands for Document Object Model. It represents HTML as objects. JavaScript uses DOM to access HTML elements. DOM allow changing content dynamically. किससे होती है? ये dynamically contents को change करती है. Accessing HTML elements. document.getElementById. अगर आपने HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करना तो आपको ये प्रॉपर्टी या इसका फंक्शन यूज करना पड़ेगा. गेट एलिमेंट्स बाय आईडी. यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट बाय इट्स आईडी. मोस्ट कॉमन DOM मेथड. फंक्शन शो मैसेज. फंक्शन नेम इज शो मैसेज इज अ फंक्शन. document.write क्या करेगा? बटन क्लिक्ड. ये बटन क्लिक्ड पे इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा. document.getElementById message.innerHTML equal to hello JavaScript. Click event with DOM. Function name is change text and message is document.getElementById demo.innerHTML equal to text change. Using onClick events. OnClick is added inside HTML tags. Call a JavaScript function used with buttons and links. ये ऑन क्लिक है. ऑन क्लिक इवेंट. आप क्या लिखेंगे? बटन. बटन में कौन सा क्या इवेंट आपने यूज कर रहे हो? ऑन क्लिक. बटन ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज टेक्स्ट एंड दिस द मैसेज क्लिक मी. फॉर्म इनपुट हैंडलिंग. DOM is used to read input values. Dot value is used with input fields. Useful for forms and validation के लिए. Like read input values. Let name equal to document.getElementById name.value and document.write welcome plus name. वेलकम और आगे उसका नेम शो करेगी जो आप यूजर यहां से एंटर करेगा. कॉमन मिस्टेक्स. Wrong ID name is used in HTML. Forgetting quotations quotes around ID. Using document.write after page load. Not linking JavaScript correctly. Practice question is create a button that display a message on click event. Change paragraph text using DOM. Read value from input box and display it.
Summary is events respond to user actions. DOM allow access to HTML elements. OnClick is commonly used. JavaScript makes web pages interactive. And lecture number 12 has been completed. JavaScript course is also completed. Student, you can read all the videos one by one, and if you have any doubt, please you can write me in comments. I will help you to solve your problem. प्रोग्राम नंबर 1 में हमने क्या करना है, बटन क्लिक इवेंट पे हमने काम करना है. हमने क्या किया, ऑन क्लिक इक्वल टू, ऑन क्लिक पे कौन सा मैसेज कॉल, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, शो मैसेज, क्लिक मी बटन, and what this message will do, this function will do, function name is show message, and it will write only over document.getElementById output and inner.html equal to button clicked. It will display only button clicked. I'm going to save this. This is the program number 1. When I will click on this button, click me, it will display this message, button clicked. I'm going to refresh this one. Again, I'm going to click this button. जब मैं बटन को क्लिक करूंगा, तो then it will display a message that is button clicked. Program number 2. Event program number 2, change text using document object model. This text will change when on click, change when on click, when you will click the button, it will call this function, and what this function will do, this is change message, it will display hello JavaScript. I'm going to save the program, refresh it. This text will change when I will click on this button, change text. They are displaying hello JavaScript. Program number 3, that is click event object, and again this message is calling, this function is executing on click event, and then function name is text change. Okay, button on click, here you are calling this function, and what this function will do, this is the function, and this function will display text change. Going to save the program, run it. Original text, when you will click to change, see text change. Refresh this one, this is the original text, click to change, text has been changed. Program number 4, button with on click. What they will do, on click event, they are calling change text message, and the change text function, this is change text function, and what it will display, it will display you click the button. Okay, I'm going to save this program, refresh this page, click the button below, click, and you are telling you click the button. Program number 5, read input values, enter your name and click the button. Okay, input, type text, text ID name, placeholder, this one, type your name. On click event, it used to call this function, welcome user. What is in welcome user? This is welcome user. Welcome user, what they will do, they will get the name, and they will check that if name equal to empty, there is nothing in the name, then it will ask please enter your name, and if you will enter your name, it will ask welcome that name. I'm going to refresh, save this page and refresh the browser, and you can see that enter your name and click the button. If I will click before entering the name, submit, they're asking me please enter your name. I'm writing computing knowledge. When I will click here, they're sending me message, display me message, welcome computing knowledge. Clear?